All right. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Let's see. Let everybody join, and then the previous link again. I don't know why this issue happens with me. Yes. Good morning. Sorry. Good afternoon, everyone. Let everybody join, and then we'll begin with our discussion because tomorrow is your exam. So quickly, just let me share this link. All right, and then we'll begin. Yes. Good afternoon. Yes. It's a request to everyone. Please share this link with your friends and other batchmates as well, and also other students who are from colleges, different colleges. Not your college doesn't matter because more and more the students are benefited from this live. This is the main purpose why I'm conducting it. Yes. Good afternoon, everyone. Shania, Ria, Shama, Jibesh, Ashim, Zidan, Rahat. Good afternoon, everyone. Yes, let more people join, and then we'll begin another, I think, 2 minutes. All right. Yes. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Yes. So tomorrow, art section, you all are having your exams, and commerce and science day after tomorrow, which is on 29th. So I want all the three sections, all the students of all these three sections to get um, as much clearance of their doubts how as much as they can, because tomorrow also I'll be conducting a live, but that's not sure. Today the live will be for 2 hours till 2 p.m., and no matter how many doubts you have, whatever questions you have regarding your letter or your report or writing, other writing skills or grammar or literature, whatever doubts you have, okay, this is your chance. Please put in your questions, your doubts in the live chat, and we will keep on discussing as we proceed. Today we are going to discuss model papers, so let more people join, and we will yes, Roshan, I'm sending the link to the groups, and it's a request. Please just share it with your friends, put it up as stories or status, whatever you feel like. I want more and more students to get benefited from this, because I will share something very weird and very surprising with you all in the coming time. Just let more people join, because I don't want anybody to miss whatever I'm teaching. Just let me share this. All right. Yes. Okay. Um, okay, how to frame answers. Okay, all right. Yes, please, कैसे questions answer लिखना है. Okay, okay, fine. You all are having your doubts. Put in your doubts in the live chat. I will keep discussing it as I proceed. I'll keep discussing it as I proceed. So please, just put in your doubts. Good afternoon. Yes, good afternoon, everyone. Till then, please take out your set 3 of a model paper. Okay, I'll just type in what. Just give me a second. Please take out your set 3. Okay, we will be discussing um, set 3 of your model paper, both term 1 and term 2. All right. Yes. Please download this as soon as you can, so that we are going to begin discussing that. Yes, good afternoon, everyone. Just let me put on my specs. Okay, so students are joining, and there are 108. Oh my God, this is for the first time. So many students have joined today. It's good. So good afternoon, everyone. My name is Rattrap, as you all know, and today we are going to begin discussing our English core, which is the exams are coming. It's not coming, it's right at the door. So art section, you are having your exams tomorrow, and science and commerce, you are going to have your exams day after tomorrow, which is on 29th.
So, before we begin with our discussion today, I would like to share so many things which we are having. Please don't go. We are going to start discussing our model set paper 3 right now. But before I end the live, I'm going to give you some tips, okay? Some tips which are so important for your exams. I'm also going to share what I faced with the students who were answering elective exams. We had our elective exams just yesterday, and I saw so many students who did not know how to write their answers, how to fill in OMR sheets, how to frame answers, which questions to answer. So many doubts students are having. Nobody is telling them, or even if teachers are telling them, they are not so well aware and they're not paying enough attention. So please don't go, because before 2 p.m., as I'm going to end my live, during that time, I'll be sharing some important tips on how to score well in your exams, and also on how to answer your both objective and subjective. Right now, we'll begin with our model paper discussion because this is going to take a lot of time and I want to go slow. And meanwhile, also drop in your questions regarding whatever chapters you want me to give a summary of. For example, should wizard hit mommy? बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को आर्टिकल कैसे लिखना है नहीं समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को इंडिगो चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लोगों को going places में प्रॉब्लम हो रही है. So all these things, put in your questions here. As I am teaching, I'll just keep on reviewing also. All right. And one more thing, if you haven't subscribed to the channel, it's a request. Do subscribe and also hit the notification bell, because people generally tell me that you come, you speak live or you make videos, but you never ask your students or your audience to subscribe your channel. So it will be great if you do that, because you will be the first one to know when my video will come up. Okay. So, all right. Okay, then we'll just begin with our session. All of you, have you all downloaded set 3 of term 1 and term 2? Please let me know in the live chat. Yes, Sheikh Raj, I will also keep be talking in Hindi. हम हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. बट बिकॉज इंग्लिश एग्जाम है और इंग्लिश टीचर है, तो इंग्लिश थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा, ताकि तुम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो थोड़ा वेल वर्स्ड हो, ठीक है. क्योंकि एग्जाम में हिंदी में तो नहीं लिख पाओगे ना, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा. सो आई विल बी टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, डोंट वरी. ऑल राइट, प्लीज आंसर. Have you all downloaded set 3? Set 3, I've pinned the message on in the live chat. It's there on the top. Have you all downloaded set 3 of model papers, that is term 1 and term 2? Please let me know. If yes, just give a thumbs up. If yes, just give a thumbs up, because that will be very convenient for me to understand. If yes, just give a thumbs up and we'll begin. All right. Okay. You haven't downloaded, then please download, because right now we are going to begin with our discussion. Take out term 1, set 3 of term 1. Okay. Set 3 of term 1, first term exam. It's there. It's written. You can get it in jharnet.com or jharupdate.com. It's there in Google as well. Just type model paper JAC board 2022 term 1 and term 2. You'll get it. All right. Okay. Fine. Rattrap may. Okay, now before I begin with the model paper discussion, I hope you all have this book in front of you or with you, because today I'm going to tell you how many questions have matched from this book. Okay, so the model papers which we will be discussing, majority of the questions have matched from this book, which is such a good news. And you can get this book in new variety store Sakchi, that is in Jamshedpur, and it's only of 50 rupees. So if you are starting from this book, your writing skill, your everything will be covered, and I can say that for sure. All right, so without wasting any time, let us begin with our model paper discussion. Are you all ready? With the model paper discussion? So shall we begin with the question number 1 of term 1? Yes or no? I'm not seeing people getting excited or happy regarding their examination. Yes? Okay, just a yes is not enough, I guess. Thoda sa make it colorful, so that I also find it interesting to teach. Only yes, the live chat is looking a little bit dull. All right, okay.
Fine. Okay, let us begin with our discussion. So, term one, English core model question paper. When you see term one, now in future might be when I'll be doing live, I will have that much technology, and with the help of which I'll put up the paper on the screen. But right now I don't have that, so I'm sorry for that. Please take it out on your phones or on your laptop, whatever is convenient for you. Now, when you see the first question which is written, I'll go line by line. All right. Um, roadside stand and Rattrap book में है. Those who are having the doubt, it's there at the end of the book. Okay, when you go towards the appendix, तीनों chapter roadside stand should wizard it mommy or Rattrap book के end में. I'll be discussing about this as well, but let's start. Okay, general instructions, total number of questions is 40. Each question carries 1 mark. 4 options will be given, that is convenient. Students are expected to select the most appropriate answer. मतलब जितना जो सबसे सही आंसर है तुमको वो select करना है. All questions are compulsory. So when you will be entering your examination hall at 2 o'clock, 2 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, 1:30 एग्जाम हॉल एंटर कर जाओगे. 2 बजे तुम लोग को OMR शीट दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा. ओके, नाउ व्हेन यू विल बी गिवन OMR शीट, कैसे उसको आंसर करना है, टुवर्ड्स द एंड. ठीक है, तो लाइव छोड़ के नहीं जाना है. टुवर्ड्स द एंड आई विल बी डिस्कसिंग. सो नाउ यू विल बी गेटिंग योर क्वेश्चन पेपर. सबसे पहले ध्यान रखना, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इन टर्म वन. सो जो पहले 1.5 आवर्स तुम्हारा टर्म वन आने वाला है उसमें सारा क्वेश्चंस कंपल्सरी है. Read the passage carefully and answer the questions from 1 to 7. So एक passage दिया रहेगा which is unseen passage, and then you have to answer the questions. So multiple choice questions है. Question number 1, मतलब ये जितना भी सातों question है वो answer करना है. Which of the following statement is not true as per the passage? Okay, now when you have not read the passage, तुमको obviously answer पता नहीं होगा, तो क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ते हैं. तुमको क्या करना है, पहले ऑप्शंस पढ़ लेना है, क्वेश्चंस को एक नजर देख लेना है, फिर पैसेज में जाना. ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स बहुत स्कोरिंग है. प्लीज इसमें 40 में 20 या 10 मत लाना, 40 में 40 कोशिश करना. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज? स्टेटमेंट एक नजर डाल लो. चिपको इज सीन एज एको फेमिनिज्म मूवमेंट, द मूवमेंट वाज अवॉर्डेड. ओके, पैसेज में प्रॉब्लम होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज यहाँ, क्योंकि हम तुमको एक बहुत सिंपल ट्रिक बता रहे हैं जिससे तुम्हारा पैसेज में एक भी गलती नहीं होगा. ओके, यू विल स्कोर वेल इन योर एग्जाम, यू विल पास योर एग्जाम. प्लीज लिसन केयरफुली. पहले पैसेज को मत पढ़ो, पहले क्वेश्चंस पढ़ लो. ठीक है, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, यू नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग, बट स्टिल रीड द क्वेश्चंस. So, पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement is not true as per the passage? Chipko is being seen as eco-feminism movement today. The movement was awarded Right Livelihood Award in 1987. First recorded event of Chipko took place in Jodhpur 1931. Chipko Andolan is a sociological, ecological movement. ठीक है, पढ़ के छोड़ दो. Second question क्या है? The movement practices the Gandhian methods of non-violence, resistance, satyagrah, civil disobedience, non-cooperation. इसमें चुनना है. ठीक है, पढ़ के छोड़ दो. Third question क्या है? Where did the Chipko movement start? Himalayan region, Garhwal region, Punjab region, Vindhya region. उसको भी छोड़ दो पढ़ के. Fourth question क्या है? Landmark event of Chipko movement took place in 26 March in Khejrali, Garhwal, Reni village, Vindhya. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? चिपको मूवमेंट रिसीव राइट. सो एक नजर तुम पहले 3-4 क्वेश्चन पढ़ लो. ठीक है, सारा नहीं पढ़ना है. नाउ गो टू द पैसेज. लेट्स रीड द पैसेज. द चिपको लिटरेरी टू क्लिंग इन हिंदी मूवमेंट और चिपको आंदोलन इज ecological movement that practices the Gandhian methods of satyagrah and non-violent resistance through the act of hugging trees to protect it from being cut. तुम्हारे पहले लाइन में ही सारा जो पहला 2-3 क्वेश्चन है वो आंसर हो गया है. Okay, I've done this passage. Okay, which passage will come? We will look into that, but let us read the question. So, which of the following statement is not true? Question number 1 क्या लिखा है? Which of the following statement is not true? Chipko is seen as an eco-feminism movement. देखो कौन सा statement mentioned है तुम्हारा ऊपर.
The movement of okay, let's read the passage. The Chipko movement started in early 1917 in Garhwal with growing resentment towards rapid deforestation. The landmark event in the struggle took place on 26 March 1974 when a group of peasant women in Reni village, Uttarakhand, acted to prevent the cutting of trees, reclaim the traditional forest. This. The first recorded event of Chipko, however, took place in village Khejrali. This is the thing. So now go to the question number 1. Question number 1 का आंसर क्या होगा? Which of the following statement is not true as per the passage? The Chipko is seen as an eco-feminism movement. ये पूरे passage में तुमको कहीं भी eco-feminism word सुनने मिला है? नहीं. तो तुमको ये सेंटेंस शायद नॉट ट्रू है, लेकिन तुम अभी OMR शीट में सर्कल नहीं करोगे. ओके, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. The movement was awarded Right Livelihood Award in 1987. तुम देखो पूरे पैसेज में कहीं पर भी 1987 वर्ड मेंशन्ड है. लास्ट लाइन, look at the last line. क्या लिखा हुआ है? That in 1987 Chipko movement was awarded the Right Livelihood Award. तो मतलब सेकंड क्वेश्चन सही मतलब नहीं है, ये वाला चीज मेंशन्ड है पैसेज में. द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको टुक प्लेस इन जोधपुर इन 1931. Please see, go to the top paragraph. The Chipko movement started this. The first recorded event of Chipko, however, took place in village Khejrali. So Khejrali में event हुआ है और यहाँ पर आंसर क्या लिखा हुआ है? जोधपुर. So what will be the correct option for the first question? It will be answer C. Okay, it will be answer C, which is I think which will be C, which is Jodhpur. Okay, so the correct option is C. The movement practices in Gandhian methods of. The movement practices the Gandhian methods of. So now see, here is the question. Eco-feminism word तुमको passage में दिख गया है. It is towards the last paragraph. So पहला question का answer C होगा. Okay. Now the second question, the movement practices the Gandhian methods of. Look in the paragraph. What will be the correct answer? What will be the answer of the second question? Anybody? What will be the answer of second question? Non-violent resistance है, हाँ, थर्ड लाइन लिखा हुआ है. सत्याग्रह है, गांधी वाला, वो भी लिखा हुआ है. सिविल डिसोबीडियंस है, वो भी कहीं ना कहीं just see it's mentioned in the paragraph. Okay, so tell me one thing. Do you want me to jump to the next question? You understood how do you have to do the comprehension part? Comprehension part कैसे करना है समझ में आया? How do you have to do the comprehension part? Did you understand? Yes? Okay, so we'll not waste much time here because it's already 12:30. You have to read पहले एक नजर डाल लो सारे क्वेश्चन में, देन गो बैक टू द पैसेज, क्योंकि पैसेज अलग अलग तरह का आएगा. तो हम इसको अगर डिस्कस कर भी लेते हैं और एग्जाम में एग्जैक्ट पैसेज उठ के आ जाएगा, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर दूसरा पैसेज आएगा तो तुमको टेक्निक सेम लगाना है, आंसर्स डिफरेंट होगा. सो फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस वंस, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और उसके बाद पैसेज जाओ और क्वेश्चन पैसेज. ओके, साइमल्टेनियसली दोनों को देखते रहो एक साथ. एक नजर क्वेश्चन पे डालो, एक नजर पैसेज पे डालो. वैसे करके तुमको तुम्हारा कीवर्ड वाला आंसर मिल जाएगा. ओके, ऑलराइट. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर, just a second. There's another passage. Now please see this students. एक और पैसेज लिखा हुआ है, 8 to 12 आंसर करना है. मतलब पहला 7 क्वेश्चन जो है तुम्हारा फर्स्ट पैसेज से होगा, सेकंड 5 क्वेश्चंस जो है 8 to 12 वो तुम्हारा सेकंड पैसेज से होगा. एंड व्हेन यू सी द सेकंड पैसेज थोड़ा छोटा है, तो 2 अनसीन पैसेज आने वाला है. नाउ डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डू यू हैव टू डू? प्लीज लेट मी नो इन द लाइव चैट. किसी को कोई डाउट है अनसीन पैसेज में? बिकॉज टुमारो और डे आफ्टर टुमारो व्हेन यू विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू, अगर कॉम्प्रीहेंशन में गलती कर देते हो तो तुम बहुत बेवकूफ हो. ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन में तुम्हारा आंसर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, पैसेज में ही लिखा हुआ है. तुमको बस वहां से पिक एंड चूज करना है. तो पहला 7 क्वेश्चंस प्लस सेकंड 5 क्वेश्चंस, 12 मार्क्स तुमको इन शॉर्ट फ्री में मिल सकता है. डिड यू अंडरस्टैंड? यस और नो?
How many don't they have not understood? Please ask. क्या नहीं समझे हो? I will discuss a letter and notice also. Okay, please don't worry. We have 1.5 hours left. 2 बजे तक live है, तो term 1, term 2 दोनों discuss करना है. We'll try to finish term 1 till 1 p.m. and 1 to 2 p.m. I'll be beginning with term 2. Okay. Yes. How many did not understand? Come on, let me know. किसको क्या समझ में नहीं आया unseen passage में? What did you not understand? Please. Yes, Kishori saw. I am from Jamshedpur, and I think that's enough. All right. Okay. Um, Please let me know क्या समझ में नहीं आया है. Okay. ऑल राइट. यस, वो ऑप्शंस में ही आंसर है तुम्हारा. जो अनसीन पैसेज में जो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही जवाब चुनना है. नाउ दैट इज मेंशन्ड इन द पैसेज. जो पैसेज दिया हुआ है उसमें तुम्हारा आंसर छुपा हुआ है. इट्स लाइक ट्रेजर हंट. ढूंढो कहां पर आंसर है. तो तुम 2-3 बार अगर क्वेश्चंस पढ़ लेते हो एंड देन यू रीड द पैसेज, तुम इतने स्मार्ट जरूर हो कि तुमको तुरंत क्लिक कर जाएगा. अच्छा ये वर्ड आ रहा है, अच्छा ये वर्ड आ रहा है. ओके, दैट यू विल बी फाइंडिंग. प्लीज प्रैक्टिस टुमारो. जिनका जिनका एग्जाम है, आर्ट स्टूडेंट्स, प्लीज प्रैक्टिस अनसीन पैसेज. मॉडल पेपर से 2-3 अनसीन पैसेज करो, बिकॉज 2 unseen passages are coming in your first term and 1 unseen passage जहां तुमको आंसर्स लिखना है, सब्जेक्टिव है, वो तुम्हारा टर्म 2 में आ रहा है. ये इसमें गलती मत करना, बिकॉज दिस इज वेरी स्कोरिंग. आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स इन दिस. ठीक है. बाकी जो क्वेश्चंस होगा तुम्हारा लिटरेचर पार्ट में होगा, राइटिंग स्किल में होगा, उसमें गलती हो सकता है, बिकॉज कोई स्टूडेंट्स कोई चैप्टर पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है. बट ये वाले पार्ट में अनसीन पैसेज में तुम्हारा जो आंसर्स है वो छपा हुआ है सामने तुम्हारे. तुमको सिर्फ करेक्ट आंसर ढूंढना है. All right. Yes. Please send in the now. The comments are going so fast. I'm unable to see what questions you people are asking. Just give me a second. This has never happened before that the comments are going so fast. I'm unable to understand. All right. Yes. Please discuss on letter, notice. Okay. And what are the questions? Okay. I am coming to notice that I will discuss in term 2. Nematullah. I will be discussing about letter and notice and all the writing skills in term 2 when I'll be doing term 2 right now. Okay, after this term 1. Right now we are just doing the objective part, जो तुम लोग को OMR sheet में answer करना है. Okay. Yes. All right. Okay. Now, all right. So did you all understand unseen passage? Unseen passage सबको समझ में आ गया है? Unseen passage. Have you all understood unseen passage? Yes or no? Okay, now I'm so sorry if I'm not able to see everybody's comment. I'm not able to read everybody's comment because the comments are going so fast. It's passing in such a speedy manner that I need to continue with the term also. As far as I can see, the OMR sheet will be checked by computer. Yes, sort of. Yes. Now, okay. So understood about the unseen passage. पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसको एक ग्लांस देखना है, देन अनसीन पैसेज देखना है, दोनों को साइमल्टेनियसली देखते रहना है. और डोंट मेक मिस्टेक्स इन अनसीन पैसेज. पहला 12 क्वेश्चंस तुम्हारे जो टर्म 1 का है वो अनसीन पैसेज से है. पहला 7 क्वेश्चन एक पैसेज से, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन दूसरे पैसेज से. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13. इन रिपोर्ट राइटिंग, narration of the event is always written in present form, simple future form, immediate form, or just a second. Yes, please tell me the answer. Let me see how many have studied and कितने लोगों को अच्छे से पता है. चलो बताओ. In report writing, narration of the event is always written. Report जब लिखते हैं, report कब लिखते हैं? जब कोई चीज ऑलरेडी हो चुका है और हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो कौन से टेंस में लिखा जाता है? ए प्रेजेंट फॉर्म, बी इमीडिएट पास्ट फॉर्म, सी सिंपल फ्यूचर फॉर्म, और डी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. किस किस चीज में लिखा जाता है? कैन एनीबॉडी प्लीज टेल मी? ओके, किस किस चीज में लिखा जाता है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस, पास्ट. एग्जैक्टली, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, बिकॉज रिपोर्ट
हम लोग तब लिखते हैं जब कोई इंसिडेंट हो चुका है, जैसे एक रिपोर्ट लिखना है कि आज स्कूल में ऐसा 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 हुआ है, या एक रिपोर्ट लिखना है दैट फॉर एग्जांपल नोटिस लिखना है. आई थिंक जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Just give me a second, okay? If you look into your books, all of you have your books in front of you. Yes, all of you have the book in front of you. If you turn to page number 5, okay, page number 5, report writing is mentioned here, and when you see the content, when you see the content which is written, ये past form में, जैसे एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया मेरा कॉलेज, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखना है. मेरे कॉलेज में आज टीचर्स डे सेलिब्रेशन हुआ, मेरे कॉलेज में आज वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हुआ, मेरे कॉलेज में आज स्पोर्ट्स डे हुआ. तो इसका एक रिपोर्ट बनता है जो न्यूज़पेपर या कहीं और भी या कहीं भी छपता है. तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाइल राइटिंग अ नोट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड? जब हम लोग नोट्स लिखते हैं, क्लास में नोट्स बनाते हो जब टीचर पढ़ाती है तो, नाउ नहीं बनाते हो दैट्स अ डिफरेंट चॉइस, बट जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो नोट्स बनाते हैं, तो किस किस फॉर्म में बनाते हैं? ए आर्टिकल्स, बी सेंटेंस, बी एब्रिविएशंस, सी सेंटेंसेस और डी प्रेपोजिशंस. ए आर्टिकल्स, बी एब्रिविएशंस, सी सेंटेंसेस और डी प्रेपोजिशंस. किस चीज में तुम लोग नोट्स बनाते हो? तुम लोग क्या लिखते हो? आर्टिकल बैठ के लिखते हो ऐसा हुआ वैसा हुआ, और तुम लोग प्रेपोजिशंस में लिखते हो, और तुम लोग सेंटेंसेस में लिखते हो. द टीचर इज टेलिंग दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन विल बी नो. यू पीपल राइट नोट्स इन एब्रीविएशन. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हो चीजों का, बिकॉज नोट्स जल्दी में लिखा जाता है. सो यू पीपल राइट इट इन एब्रीविएशन. करेक्ट आंसर. वेरी गुड. यस, हेमा, सिमरन, again Rajesh, the correct answer, all those who are saying the correct, Anushka, the correct answer, Nitin, yes, Shagufa, the correct answer is B, that is abbreviation. In a formal letter to the editor, in a formal letter to the editor, the complimentary clause should be yours loving, yours truly, both 1 and 2, D none of these. फॉर्मल लेटर में क्या चीज से हम लोग आंसर एंड करते हैं, सॉरी लेटर एंड करते हैं? पहला योर्स लविंग से, दूसरा योर्स ट्रूली से, तीसरा बोथ ए एंड बी से, या फिर चौथा नन ऑफ द अबव. क्या चीज से करते हैं? यस, क्या चीज से एंड करते हैं? ऑप्शन नंबर बताओ, एंड प्लीज ऑल्सो राइट ऑप्शन के साथ राइट द करेक्ट आंसर एज वेल. क्या चीज से एंड करते हैं? Exactly, yours truly is the correct answer, because yours lovingly होता है, loving नहीं होता है. जब लेटर भी लिखते हैं तो yours lovingly होता है. एंड lovingly कब लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स में, जैसे हम अपने मम्मी को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने फादर को लिख रहे हैं, अपने सिस्टर्स को, अपने कजिन्स को लिख रहे हैं, देन इट इज yours lovingly. ठीक है, बट यहां पर क्वेश्चन क्या है? सिर्फ लेटर नहीं है, फॉर्मल लेटर. The conclusion will be, बहुत बार क्या होगा students, you will not be able to understand the question. So when that happens, please read the options. Sometime you will not be able to understand what does complimentary clause mean. मैम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब समझ में नहीं आ रहा. अगर वहां पर खड़े इन्विजिलेटर तुमको सही जवाब नहीं बताएंगे तो तुम क्या सही आंसर नहीं दोगी या नहीं दोगे? नो. योर ट्रिक इज रीड द ऑप्शंस. जैसे ऑप्शन पढ़ोगे तुमको एक समझ में आ जाएगा. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज योर्स ट्रूली. Coming to the next question, question number 16. At which place with love can be used in an informal letter? At which place with love can be used in an informal letter? A closing, B heading, C opening, D body. जब हम लोग किसी को लेटर लिखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम अपने ऑडियंस को लिख रहे हैं, अपने व्यूअर्स को लिख रहे हैं, विद लव द रक्षा आफ्ताब. ओके, तो हम वो कहाँ लिखते हैं? शुरुआत में हेडिंग के तौर पे लिखते हैं, ओपनिंग के तौर पे लिखते हैं, ए क्लोजिंग के तौर पे लिखते हैं, बी हेडिंग के तौर पे लिखते हैं, सी ओपनिंग के तौर पे लिखते हैं, और डी बॉडी के तौर पे लिखते हैं. हाउ डू वी राइट? एग्जैक्टली, यस, लकी, राजेश, पल्लवी, ललित, कृति, दीपिका, राजेंद्र, again it's passing very fast, Rishu, Sadhya,
Abhishek. Yes, the correct answer is, I'm sorry if I missed anybody's name because it's going so hard. The correct answer is option number A, which is closing. Suppose we do not know the recipient's name. Okay, the next question number 17. Suppose we do not know the recipient's name of a letter, how can we address the recipient? अगर हमको रेसिपिएंट का नाम नहीं पता है, ठीक है, हमको ये नहीं पता है कि हम उस इंसान को जानते नहीं है, okay, whether it's a male or a female or who she is or who he is, तो हम कैसे एड्रेस करेंगे? A, dear Mr. or Mrs. B, hello. C, dear sir or dear madam. D, my dear. कैसे करेंगे एड्रेस? ओके, योर्स ट्रूली वाला आंसर खत्म हो गया है. प्लीज सी, जब हम किसी को, जो रिसीवर है, रिसीवर मतलब जो लेटर रिसीव कर रहा है, उसको अगर हम लोग नहीं जानते हैं किसको लेटर भेज रहे हैं, तो हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे? ए, डियर मिस्टर और मिसेस. बी, हेलो. सी, डियर मिस, डियर सर और मैडम. डी, माय डियर. Exactly, excellent students. I'm so happy you people are doing so well. Rajendra, Anisha, Lucky again, Kriti, Bittu, Robin or Ronit, Priya, Ayush. Yes, you all are completely correct. The correct option is C, dear sir or dear madam. क्योंकि हम नहीं जानते वो married है unmarried है, तो Mr. और Mrs. तो नहीं बोल सकते हैं. अगर वो मिस हुई तो hello बोलना थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा. तो हम लोग का सबसे सेफ ऑप्शन है डियर सर और मैडम कर देने का. अगर वो सर होंगे तो सर, मैडम होंगे तो मैडम, मैरिड अनमैरिड का बात ही नहीं है. नाउ कमिंग टू द 18th क्वेश्चन, हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल? जब हम लोग एक आर्टिकल लिख रहे हैं, प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, देन चूज द करेक्ट आंसर. ओएमआर में बका के सर्कल मत कर देना, व्हाइटनर नहीं लगने वाला आंसर्स में, ठीक है? और अगर लग रहा है तो मतलब तुम्हारा पेपर गया. ध्यान देना, आंसर्स में व्हाइटनर नहीं लगना चाहिए, डिटेल्स में लग सकता है, पर उसमें गलती मत करना. आई विल एक्सप्लेन कैसे ओएमआर शीट आंसर करना है, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड. डोंट फॉरगेट. एंड यस, दोज हु आर जॉइनिंग राइट नाउ, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज आई एम हियर ओनली फॉर यू ऑल. तो यहाँ जितना भी वीडियोस बनता है सिर्फ तुम लोग के लिए बनता है. तो अगर तुम लोग वो पहले हो गए who will watch the video as soon as I upload it, it will mean a lot to me. So subscribe and also hit this notification bell and share this video with your friends. Okay. Now coming back to 18th question, who should be kept in mind while writing a good article? जब हम लोग एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो किसको जहन में रखना चाहिए? A, editor of the newspaper. B, owner of the newspaper. C, readers and their mood. D, English teacher of school. Now you need to remember me on a good note, but आर्टिकल लिखने में किसको ध्यान में रखना है? अब तुम बोलोगे मैम आर्टिकल लिख रहे हैं एग्जाम में ना, तो आपका ध्यान था क्योंकि आप ये बताई थी ना, कॉमन सेंस. ओके, जब आर्टिकल लिख रहे हैं तो हम लोग एडिटर को नहीं रखेंगे नजर में. क्यों? क्योंकि एडिटर, जब हम लोग लेटर लिखते हैं तब एडिटर को रखेंगे नजर में. आर्टिकल जब लिख रहे हैं तो हम लोग ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर को भी क्यों रखेंगे नजर में? हम लोग रीडर्स को रखेंगे. आर्टिकल पढ़ता कौन है? Who reads an article? The readers. We read the article. So the correct option will be, excellent students, the correct option will be C, readers and their mood. उनके mood के हिसाब से तुमको article लिखना है, ध्यान में रखना है. Coming to the 19th question, the heading or the subject of the notice. The heading or the subject of the notice should A, not be there. B, be brief and catchy. C, be long-tailed keyword. D, none of these. The heading of the notice. Again, if you see this book, everything is given in this book. And when you see a notice written, यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ है और नीचे हेडिंग है. हेडिंग है हेल्थ अवेयरनेस कैंप. हेडिंग है एडवाइजरी टू चेक द यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स. तो जो हमारा हेडिंग है वो कैसा होना चाहिए? होना ही नहीं चाहिए. गलत जवाब, क्योंकि हेडिंग यहाँ पर मेंशन्ड है. सेकंड ऑप्शन, बी ब्रीफ एंड कैची. छोटा होना चाहिए और कैची होना चाहिए, लोग को अट्रैक्ट करना चाहिए. ये शायद आंसर हो सकता है. सी, बी लॉन्ग टेल कीवर्ड. नहीं, ऑब्वियसली 4-5 लाइन का हेडिंग कौन लिखता है? डी, नन ऑफ दीज. नहीं, तो सही ऑप्शन विल बी exactly be brief and catchy. Your heading should be brief and catchy. Very good. Now coming to the 20th question, where is the salutation now? Okay, we have only 10 minutes left. We need to do as much as far as we can because term 2 बहुत lengthy है and term 2 हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है because बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको term 2 में बहुत डाउट्स है.
ठीक है, तो वो हम लोग को ध्यान देना है. डियर सर और मैडम चला गया है. Okay, it's now coming to the next question. 20th question. Where is the salutation placed in the notice? Salutation notice में कहाँ place करते हैं? किसको किसको पता है salutation किसको बोलते हैं? How many know salutation किसको बोलते हैं? How many know salutation किसको बोलते हैं? Yes. Can anybody tell me salutation किसको बोलते हैं? Yes, exactly. Salutation is, just a second. Let me upload the link here as well because students are asking for the link. Salutation is dear sir or ma'am. Okay? Salutation is dear sir or ma'am. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Where is the salutation placed in a notice? Just above the date, just below the date, along with the date. There is no need for salutation. There is no need for salutation. Notice में क्या लिखते हो dear sir or ma'am? Dear sir or ma'am किस में लिखा जाता है? It's a part of the address. Exactly, Anisha. It is a part of the letter. It is part of the letter, dear sir or madam. So notice में the correct option is very good. Rohan, Fariha, Nitin, Shalush, Dharti, Ayush, Amreen, Kefu, Shoaib, Vikram, Archana. Yes, the correct option is option number D. Now we are done with our language part. Okay, coming to the literature, be ready because this is going to be little dicey. Okay, question number 21. Which fear? Now we'll be doing this correctly क्योंकि term 2 जाना है और हम लोग के पास time है सिर्फ 1 घंटा. Okay. Now, if you're willing to give your time, then that's good. I'll continue. But we are having time till 2 p.m. If we'll see if there's a need, we'll exceed. Which fear of his life does Douglas talk about in the essay? William Douglas, किस chapter का author था? Let me see. William Douglas किस chapter का author था? William Douglas is the author of which chapter? Yes, William Douglas is the author of which chapter? Deep water, exactly. Very good. Deep water. So, किस चीज का fear था? Fear of water, fear of fire, fear of darkness, fear of night. Deep water chapter का नाम है. So, correct option is A, which is option A, which is fear of water. Exactly, which is fear of water. So, coming to the question number 2. Question number 2. How old was Douglas when he decided to learn to swim? How old was Douglas when he decided to learn to swim? Okay. So how old was Douglas? Am I visible to everyone? Okay. Yes. How old was Douglas? A, 10 or 11, B, 12 or 13, C, 11 or 12, D, 13 or 14. So A, 10 or 11, B, 12 or 13, C, 11 or 12, D, 13 or 14. What is the correct answer? Exactly A, 10 or 11. When you open the chapter, the first line itself is when I was 10 or 11 years of age, I decided to learn swimming at YMCA pool in Yakima River. Okay, so got it. Third question. Which attitude of M. Hamel surprised France? Which attitude of M. Hamel surprised France? A, soft and kind, B, rude, C, rude and strict, D, firm and strict. Which 23 का क्या होगा? 23 का, that's what I'm saying. जब फ्रांस स्कूल एंटर करता है तो वो देखता है एम हैमिल हर दिन बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन आज वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से फ्रांस को बोलते हैं आओ फ्रांस क्लास में बैठो, तुम इतने देर हो, हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करे थे. तो उनका वो सॉफ्ट बिहेवियर देख के फ्रांस को बहुत सरप्राइजिंग लगता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट एंड काइंड. 24th question. When people are enslaved, what key do they have to the prison according to M. Hamel? So M. Hamel has said a statement कि जब लोग प्रिजन में रहते हैं, जब लोग कैद में रहते हैं, तो एक ऐसा चीज है जो एक फ्रीडम की तरह एक्ट करता है, एज अ की टू देयर फ्रीडम एक्ट करता है. वो क्या चीज के बारे में बात किए थे? A, their behavior, B, their power, C, their will to fight, or D, the language.
यस, द करेक्ट ऑप्शन इज लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा चीज है जैसे आज हम तुम लोग से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इधर आई एम टॉकिंग इन हिंदी और आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, बट आई एम टॉकिंग थ्रू अ लैंग्वेज, सो आई एम यूजिंग अ लैंग्वेज. Okay, I am expressing myself through a language, so this language acts as a key to my freedom. Okay, so the correct option is option number D, language. Okay, now coming to the 25th question. Why did Sahib and his family come to India? Sahib and उनके family जो थे वो इंडिया क्यों आए थे? A, they liked India. B, they were expelled from there because of communal violence there, because storms destroyed their homes and fields. Where does Sahib live? Um, why did Sahib and his family come to India? I think I've completed this. Let us, all of you have downloaded set 3 of term 1. Okay, let me do this. Then we'll jump to, just a second. Okay. Yes. So, why did Sahib come and his family come to India? The correct option will be option number D, because storms आया था and it destroyed their houses and field. Where does Sahib live? Simapuri, Manipur, Dhaka और पटना. साहिब कहाँ रहता है? लिखा हुआ है वेयर डज साहिब लिव. ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि साहिब रहता कहाँ था. वेयर डज साहिब लिव राइट नाउ? Okay, so he lives in Simapuri, which is A, correct option. Dhaka नहीं होगा क्योंकि ये past के बारे में नहीं पूछ रहा है. Question number 27. What is center of India's glass blowing industry? I think I did this set, isn't it? हम 24th को ये set किए थे. Okay, so set 3 of term 1 नहीं download करना. Please download set 5. Okay, just a second. टर्म 2 का सेट 4 एंड 5 डाउनलोड कर लो. Just a second. I don't know where did my text go. Okay. Set 2 का term and set 2 sorry, term 2 का set 4 and 5. Please download that. Set 4 का term and set term 2 का set 4 and 5 download कर लो. Okay, because we'll be discussing that. I think हम ये वाला set discuss कर चुके थे. You should have told me before. Anyway, it's okay. So India's glass blowing industry is not Firozpur, not Aurangabad, not Faridabad, but Firozabad. ठीक है. In what kind of house does Mukesh live? A big house, small house, half-built hut, a hut. A big house, a small house, half-built hut, or a hut. Where does he live? He lives in a half-built hut. ठीक है, आधा अधूरा घर बना था. What is the symbol of total symbol from nature does the poet use to prove that keeping quiet is total inactivity? Sun, earth, soil, nature. किस चीज को use करती है poet to show that it is a symbol of inactivity? Let me see how many know the answer. Earth, exactly. Fishermen in the cold sea would not harm seahorses, whales, mermaid, tortoises. Seahorses, whales, mermaid, tortoises. Sorry. Fishermen in the cold sea will not harm whom? The correct answer is whale, I guess. Yes, it's whale. It's B. Why was mother's face pale? Due to her age, due to her illness, due to loneliness, or as her daughter was going away? Mother's face pale क्यों था? उनके एज के वजह से, उनके इलनेस की वजह से, उनके लोनलीनेस की वजह से, या उनकी बेटी जा रही है? Obviously because my mother at 66, उनके एज की वजह से. What is poet's childhood fear? Mother's illness, mother's growing age, losing a mother forever, not meeting her mother soon. What is her कैसे करोगे डाउनलोड तुम कर सकते हो through I don't have it here, so that's why I cannot upload it right now, but you can download it from just type model test paper 2022 JAC board term 2. तो तुमको सारा एक साइट खुलेगा झार.net.com और झारupdate.com. उस पर क्लिक करोगे तो सारा टर्म 1 का जितना भी सब्जेक्ट है वो आ जाएगा. Okay. So losing a mother forever, C option is the correct answer. Identify the literary device in like rootless weeds. Like rootless weeds लिखा हुआ है, तो जहां like आता है rose, red like roses, blue like water, blue like sky, तो like हमेशा simile होता है. So the correct answer is A, simile. Okay.
What do the governor, inspector, visitor in the poem depict? Higher officials, government officials, political people, or powerful and influential people? ये जो क्वेश्चन है, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट, क्या डिपिक्ट करते हैं? ये रोड साइड स्टैंड का क्वेश्चन है. हायर ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, political people, or powerful and influential people? Please answer the correct question. Term 2 will begin in another 5 minutes. So all those who are waiting for term 2, waiting for me to discuss the writing skill, letter, notice, article, jitna bhi lengthy questions hai descriptive of Vistas and Flamingo, please stay tuned because term 2 is going to begin in another 5 minutes, and we will jump to set 4 और set 5 दोनों डाउनलोड करके रखो. जो भी हम लोग को लगेगा अभी वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है? All right. So the question I'm saying is, what do the governor, inspector, visitor in the poem depict? A. Higher officials. B. Government officials. C. Political people. Or D. Powerful and influential people. क्या क्या डिपिक्ट करते हैं? पॉलिटिकल पीपल, गवर्नर, इंस्पेक्टर क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? आई थिंक इट्स पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल दे आर डिपिक्टिंग, बिकॉज गवर्नर भी है और इंस्पेक्टर भी है. ठीक है, तो पॉलिटिकल भी हो गया, गवर्नमेंट भी हो गया. How many time zones is there in Tishani Doshi? Does Tishani Doshi cross during her journey? 6 time zones, 9 time zones, 7 time zones, or 8 time zones? How many time zones does Tishani Joshi cross? 6, 9, 7, or 7 or 8? 9 time zones. 6 check post hota tha और 9 time zones tha. How many years has the program Students on Ice been in operation? 5, 7, 6, 8. How many years? 5, 7, 6, 8. कितना साल Students on Ice program जो है वो चला था? 5, 7, 6, 8. 6 years चला था, and 6 checkpoints भी था, ये याद रखना. Let the tigers beware. Who said this? Astrologers, palmists, the Prince Jungjung Bahadur, or the ministers? Let tigers beware. ये कौन बोला था? Astrologers, Prince Jungjung Bahadur, palmist, or the ministers? Okay, now all these questions you can find in here. ओके, मेजॉरिटी क्वेश्चंस इस बुक से. अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन को एक एक चैप्टर से दिखाएं कहां पर क्या क्वेश्चन है, लेकिन 90-80% क्वेश्चन इस बुक से मैच किया है. सो इफ यू डोंट हैव दिस बुक, प्लीज टेक इट एंड स्टडी फ्रॉम इट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. Yes, the correct option is option number B, the Prince Jungjung Bahadur. How many rings did Maharaja send to British officers, good lady? 30, 40, 50, 60. कितना rings भेजे थे? ब्रिटिश जो महाराजा थे वो ब्रिटिश ऑफिसर के गुड लेडी को कितना रिंग भेजे थे? 30, 50, 30, 40, 50, 60. 30, 40, 50, 60. Are you sure it's 50? 70 is not there in the option. Person who is saying 70. How many rings did he send? Just give me a second. Yes, how many rings did he send? Yes, the correct answer 40, 50, 60, or 30, 40, 50, or 60. 50. All right. What was Dr. Sadao's age when he was sent to America? 21, 22, 23, 24. Dr. Sadao, the chapter Enemy, क्या था उनका एज जब वो अमेरिका गए थे? The name of the book Aditya is Board Booster, and it is available in new variety stores Sakchi, Jamshedpur. Okay, I'll upload the details in the description box. You can go and buy. The chapter is Enemy. What was Dr. Sadao's age when he was sent to America? 21, 22, 23, or 24? What was his age? 22. In whose bedroom did Dr. Sadao carry the wounded man? His father's, his children, his father's, his mother's, his children, his own. किसके बेडरूम में वो एनिमी को, वो अमेरिकन एनिमी को लेके गए थे? His father, his children, his mother, his children's, or his own? किसके बेडरूम में लेके गए थे? A lot of students are saying his own, a lot of students is saying his father's. What will be the correct answer?
Now, in somewhere it's just written he has taken it to the to one's room, but I think it is his father's, I guess, or because as far as I know, somebody there's a bit of confusion here. Somebody said it is his father. Somebody is saying it is his own. And but when you look, Hana is also called into that room. Okay, and they go and check. So I think it is his father's. Now let us come to term. So this was your term one completion. Is everybody now fully prepared for term one? Just give me just let me know if you're understood, if you've understood, and if you're prepared for term one. We are beginning with our term two. So get set ready. We are beginning with a term two. The name of the book, Kriti, is Board Booster, and it is by Shiksha Sagar publication. It's available in new variety store Sakchi, Jamshedpur. It's near Shitla Mandir, in opposite Punjab and Sindh Bank, Tank Road. Okay, it's in the in that road, Tank Road. All right. So how many have prepared? How many have prepared? Yes. Sorry. How many have understood term one? How many have understood term one? How many have understood term one? So shall we begin with our term two? Shall we begin with our term two? Yes or no? Okay. So let me just take out the question from that. Just a second. I think yes. Okay. All right. I think 40's answer is he took his to his father's room. All right, I'm not very sure about it, but I think it is his father's. Once, please check it on your own as well. Somebody says it is his own. I've not taught that chapter so well, so I don't know the exact correct answer. But however, I let you know. I'll put it up. What was the perfect, the sure answer for question number 40 in on the Instagram story, and I'll also send it in your college groups as well. But as far as I think it is I think people are saying it's father's, but I think somewhere I think it is his own. So I think it is his own, because he also calls his wife Hana to treat him. So if a question comes in your exam, whose help did Dr. Sadao take in order to treat that American soldier, your answer will be Hana. Okay. All right, yes. Okay, so let us begin with our term two. Please tell your friends, tell your batchmates that we are going to begin with our term two right now. All right. So, term two, set five. Please open term two, set five. All of you open that. Or just a second, you can open term two, set four as well. Okay, did I do term two set three in the previous live? Can anybody tell me, did I do term two set three in the previous live? Then we'll begin with our okay. All right. Just let me see the questions also. Okay. No, we didn't do that. Yes, board booster में exam से questions आएगा definitely. All right. So let us begin with our set two or set four. What did I say? I said set four, right?
So let us begin with our set 4 of term 2. Okay, set 4 of term 2. All of you, you have your questions in front of you. Okay, now please see the question pattern. Set 4 of term 2. The time limit is 1.5 hours. मतलब पहला 1.5 hours तुम लोग को OMR शीट मिलेगा. तुम लोग वो OMR शीट ले लिए, ठीक है, वो OMR शीट में फिल कर दिए. आफ्टर 1.5 hours वो OMR शीट तुम्हारा ले लिया जाएगा एंड यू विल बी गिवन प्रॉपर आंसर शीट्स. ठीक है, 10th में था कि क्वेश्चन पेपर में ही लिख देना है, बट 12th में तुम लोग को एक प्रॉपर आंसर शीट मिलेगा एंड अलग से क्वेश्चन पेपर मिलेगा एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स इन दैट आंसर शीट. ऑलराइट, so when you see set 4 of term 2, I think you will just give me a second. Yes, in this the first, read the general instructions. Read the general instruction. Term 2 only questions hi rahega. All those students who are having doubts regarding term 2, please send in your questions, because kal art section tumhara exams hai, parso commerce or science tumhara exam hai. Okay, so I will also be doing a live tomorrow if I can for my commerce and science students, so that ek din pehle exam ke un log ko bhi help mil jaye. Okay, now general instructions, candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. ठीक है, all answers must be correctly numbered as in the question paper. तो अगर तुम सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हो तो तुम्हारे जो आंसर शीट है उसमें सेक्शन बी लिखोगे और क्वेश्चन 2 भी लिखोगे. ठीक है, प्लीज डोंट इंटरचेंज द सेक्शंस. जैसे सेक्शन ए कर रहे हो तो सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन करके फिर सेक्शन बी में जाओगे. अगर सेक्शन बी कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन करके फिर सेक्शन सी में जाना. तुम सेक्शन आगे पीछे कर सकते हो. मान लो तुमको सेक्शन बी अच्छे से आ रहा है, तुम सेक्शन बी पहले कर लिए, सेक्शन डी पहले कर लिए, लेकिन उसके अंदर का क्वेश्चन उसी में रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि तुम सेक्शन बी का 2 क्वेश्चन बना रहे हो, फिर मन किया तो सेक्शन सी में आ गए, फिर मन किया तो सेक्शन ए में चले गए. नहीं, पहले एक सेक्शन कंप्लीट कर लो एंड देन चेंज इट. ओके, yes, why did Rattrap change his ways? I will let you know. That's also there in this book. I'll explain what is the question. Rattrap seller changed his ways. All those people who are having this doubt regarding Rattrap seller अपना ways क्यों बदला था? Rattrap seller changed his ways because Edla, because of the behavior, because of the way he was treated by Iron Master's daughter Edla Wilmanson. She made him feel comforted and she made him realize that she helped him in during that time of need, and she treated him as a captain. Even after knowing that he was a thief, he was a peddler, he was a person who has stolen 30 kroners, she still treated him with that respect. And because Edla Wilmanson usko us respect se treat की है, रैट्रैप सेलर, रैट्रैप पेडलर को ऐसा लगा कि उसका ड्यूटी है कि वो भी एज अ कैप्टन उसको थैंक यू बोले, एंड दैट्स व्हाई ही चेंज्ड हिज वेज वर चेंज्ड. ही लेफ्ट दैट पैकेज जिसमें वो लेटर लिखा था एंड वो एक रैट्रैप विद 30 kroners छोड़ के चले जाते हैं. Okay, now let us begin with the term 2. So answers the question must be in correct in the context. Okay, section A is question unseen passage. Please पैटर्न समझ लो क्वेश्चंस का. सेक्शन ए इज अनसीन पैसेज. रीड द पैसेज केयरफुली and answer any 5 questions. All those students who are leaving the live and going or will be joining again, please understand that term 2 is very important, and right now we are going to begin discussing that. And after I finish with term 2, I will be explaining you how to score well in your exams and how to write proper answers. So I don't think so you want to miss that opportunity. Okay, now read the passage carefully and answer any 5 questions from 1 to 7. मतलब जो पहला पैसेज दिया हुआ है उसमें 7 क्वेश्चंस दिया है. 7 में से तुमको कोई 5 करना है. So please read the heading which is there. Section A में unseen passage है जिसमें
7 क्वेश्चंस दिया हुआ है और कोई 5 का तुमको आंसर करना है ना, कौन से 5 का तुमको आंसर करना है, दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में अनसीन पैसेज हो गया, यू विल डू दैट। नाउ आई एम नॉट डूइंग अनसीन पैसेज बिकॉज हम पहला अनसीन पैसेज बता चुके हैं तुमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में कैसे पढ़ना है एंड इसमें आंसर कैसे करना है ना। हाउ मेनी मार्क्स विल बी द अनसीन पैसेज, द क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, इसमें से कोई 5 करना है, इट इज 2 मार्क्स ईच। तो जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सो तुमको कितना लिखना है, मैक्सिमम 4 लाइन। ठीक है, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, राइट मैक्सिमम ऑफ 4 लाइंस, दैट्स इट, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एंड तुम प्लीज ढूंढना तुम्हारा आंसर कॉन्टेक्स्ट में ही होगा, तुम्हारा आंसर पैसेज में ही होगा। टेक आउट फ्रॉम देयर एंड स्टार्ट राइटिंग। Okay, now please see the question number 7. Find out the words from the passage which mean the same as the following. A state of high spiritual knowledge, B those bound to die. तो ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है एक बार तुम समझ लो एंड देन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। ठीक है, 5 मार्क्स में कितना लिखना है, आयुष आई विल एक्सप्लेन व्हेन आई रीच दैट क्वेश्चन जो सेक्शन डी में है तुम्हारा। ठीक है, अभी हम लोग लाइन बाय लाइन जा रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए। मैम अगर 4 लाइन जितना आंसर नहीं लिखे नहीं मिला तो पैसेज से तब क्या, कोई बात नहीं, अगर तुमको अपने वर्ड्स में लिखना है, हम ये नहीं कह रहे कि तुमको पैसेज से कॉपी कर देना है, ओके डिटो, वो नहीं करना है, तुमको अपने वर्ड्स में भी लिखना है। अगर तुम 4 लाइन नहीं लिख पा रहे हो, सिर्फ 2 लाइन लिख पाए या सिर्फ 3 लाइन लिख पाए, दैट्स अप टू यू, बट द पॉइंट इज योर आंसर शुड बी आंसरिंग द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है हु वाज गौतम बुद्धा, अब तुम लिख दोगे गौतम बुद्धा वहां रहते थे, वो ये करते थे, उनका ये शौक था, पर वो कौन थे ये बताओगे ही नहीं। तो तुम 10 लाइन क्यों ना लिख दो, तुम्हारा आंसर में तुमको मार्क्स उतना नहीं मिल पाएगा। बट यू विल जस्ट स्टेट दैट गौतम बुद्धा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिलीजियस टीचर्स, ही बिगैन हिज लाइफ एज अ प्रिंस, एंड एक और 2 लाइन ऐड कर दो, तुमको तुम्हारा 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो ऑलराइट, पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखना है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है पैसेज से, तुमको उसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में बना के पूछना है। ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन बी। सो पहला सेक्शन में, सेक्शन ए में अनसीन पैसेज है, प्लीज इसको दिमाग में घुसा लो अच्छे से। एंड अनसीन पैसेज में 7 क्वेश्चंस है जिसमें से कितना आंसर करना है, प्लीज लेट मी नो फास्ट। अनसीन पैसेज में 7 क्वेश्चंस है, हाउ मेनी यू हैव टू आंसर फ्रॉम दैट, 1 2 3 4 5, कितना आंसर करना है। मॉडल पेपर से चांसेस है 70-80% क्वेश्चंस मैच होने वाला है और उसका सारा आंसर्स तुमको इस बुक में मिल जाएगा। ओके, यस एग्जैक्टली, 5 आंसर करना है, वेरी गुड। सो 7 क्वेश्चंस, पहला सेक्शन ए इज अनसीन पैसेज, गो लाइन बाय लाइन, डोंट जंप राइट नाउ टू क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, या फिर सेक्शन सी में क्या है मैम, अभी लाइन बाय लाइन चलते हैं। ओके, सो सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आएगा, हम टर्म 2 के बारे में बता रहे हैं। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आएगा जिसमें 7 क्वेश्चंस रहेगा, तुमको कोई 5 आंसर करना है। तुम प्लीज पैसेज पढ़ लेना, क्वेश्चंस पढ़ लेना, जो तुमको लग रहा है एकदम श्योर आंसर हमको आ ही रहा है उसी को अटेम्प्ट करना। डन, चलो अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला हेडिंग क्या लिखा हुआ है, आंसर एनी 2 of the following in not more than 100 words। तो तुमको यहाँ पर वर्ड्स दे दिया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है कि वो वर्ड्स गिन पाएंगे, ठीक है, कि 1 2 3 4 करके उतना टाइम नहीं रहता है, स्पेशली तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 आवर्स है सिर्फ 1.5 आवर्स। तो प्लीज क्वेश्चंस देख लेना, ऐसा मत करना कि सारा का सारा क्वेश्चन तुम आंसर कर दिए, तुमको पता ही नहीं था आंसर एनी 2 है, आंसर एनी 3 है, आंसर एनी 1 है, और तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया और तुम सेक्शन डी तक पहुंच ही नहीं पाए। डोंट डू दैट, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस, रीड द हेडिंग एंड देन स्टार्ट आंसरिंग। तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, आंसर एनी 2 of the following questions in not more than 100 words। ओके, 2 of the following questions। तो अब सेक्शन बी में क्या है और कितने मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है। तो तुम्हारा जो आंसर है वो 5 मार्क्स का है। अब हम बताते हैं आयुष 5 मार्क्स में कितना लाइन लिखना है, 100 वर्ड्स। नाउ इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, अब तुम लिटरेचर का 5 मार्क्स का आंसर लिखोगे तो उसका लाइंस अलग होगा,
तुम लैंग्वेज में 5 मार्क्स आंसर लिखोगे तो उसका लाइन अलग होगा. जब सेक्शन बी में हम लोग जंप कर रहे हैं तो हम लोग राइटिंग स्किल पे जंप कर रहे हैं. ठीक है, अब राइटिंग स्किल क्या क्या है, लेट अस रीड द क्वेश्चंस, तब हम लोग डिस्कस करेंगे. 8th क्वेश्चन, प्लीज देखो क्वेश्चन नंबर 8 to 11. और तुम लोग को बहुत कन्वीनियंटली बोर्ड्स जो है, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी द स्क्रीन और नॉट, आर यू ऑल एबल टू आंसर एनी टू के नीचे क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चंस 8 to 10, मतलब 8, 9, 10, ये तीनों में से कोई दो आंसर करना है. अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है. क्वेश्चन नंबर 8, यू आर दीपक कुमार, सेक्रेटरी हिस्ट्री सोसाइटी डीएवी देहरादून, राइट अ नोटिस फॉर योर नोटिस स्कूल नोटिस बोर्ड. तुमको नोटिस लिखना है, मतलब पहला क्वेश्चन नोटिस का है. कैसे लिखना है बता रहे, रुक जाओ. सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. यू आर डिस्टर्ब बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट ऑल नाइट, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया. सेकेंड क्वेश्चन लेटर टू द एडिटर है. थर्ड क्वेश्चन, अगेन राइट अ रिपोर्ट ऑन फायर एक्सीडेंट यू विटनेस. तो तुम्हारा जो 3 क्वेश्चंस है, ठीक है, तुम्हारा जो 3 क्वेश्चंस है, पहला नोटिस लिखना है, दूसरा लेटर टू द एडिटर है, और तीसरा रिपोर्ट है. अब तुमको चूज करना है तुम बहुत अच्छा से क्या पढ़ के आए हो, तुम कौन सा एक चीज है जो अच्छा से नहीं पढ़ के आए हो. फॉर एग्जाम्पल कोई लेटर अच्छे से नहीं करके आया तो वो रिपोर्ट और नोटिस लिखेगा, कोई रिपोर्ट अच्छे से करके नहीं आया तो वो नोटिस और लेटर लिखेगा, कोई नोटिस अच्छे से नहीं करके आया तो वो लेटर और रिपोर्ट लिखेगा. ओके, सेम गोज विथ वट एवर यू वॉन्ट टू डू. अब अगर तुम्हारा मन कर रहा है लेटर लिखने का, ठीक है, लेटर ज्यादा अच्छा से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, लेटर 9, तो तुम सेक्शन बी लिखोगे पेज के मिडिल में, और फिर 9 नंबर दोगे और लेटर लिखना शुरू करोगे. प्लीज ऐसा मत करना कि तुम क्वेश्चन नंबर 8 दे दिए और लेटर लिख रहे हो, तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. यू हैव टू राइट. फॉर्मेट बताएं मोहम्मद अवैस. फॉर्मेट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. तुम्हारे उस वीडियो में पूरा स्क्रीन में सारे चीज का फॉर्मेट आ रहा है और उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है. तो अभी अगर हम फॉर्मेट बताने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर पेन और बोर्ड नहीं है जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू हैव टू आंसर. Mohammed Awais, don't worry. I'll put the link of that video in the description box after this video is I finished with the live. तुम वो वीडियो देख लेना एंड तुमको सारा फॉर्मेट उसमें समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई एम क्लियर अवैस, प्लीज लेट मी नो. It's gamer pairs by the ID which you said. Format हम बता रहे हैं. I'll put the link of that video in this the description box of this video and you will get the entire format. तो जब हम लोग नोटिस लिखते हैं, ठीक है, जब नोटिस लिखते हैं सबसे पहले हम लोग इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे. चलो तुम लोग के कन्वीनियंट के लिए बता देते हैं. Somebody is asking my name. My name is Daraksha Aftab and I am an English teacher. Okay, all right. So notice पहले स्कूल का नाम, यहाँ पर स्कूल का नाम क्या लिखा हुआ है, डीएवी देहरादून. तो तुम यहाँ पर डीएवी देहरादून लिखोगे टॉप में. देन नेक्स्ट लिखोगे NOTICE. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मार्जिन में चले जाओगे, लेफ्ट मार्जिन में, और उस दिन का डेट लिखोगे. देन नीचे नेक्स्ट लाइन आओगे, मिडिल में आओगे और हेडिंग लिखोगे. हेडिंग यहाँ पर क्या है, दैट नोटिस स्कूल इनवाइटिंग गेम्स फॉर अ ट्रिप टू पुरी. सो तुम्हारा हेडिंग रहेगा इनविटेशन फॉर अ ट्रिप टू पुरी, सिंपल एज दैट. नेक्स्ट लाइन में आओगे और तुम स्टार्ट कर दोगे अपना दिस इज दिस एंड हम नोटिस लिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा है. फिर तुम लाइन एंड करोगे जब पैराग्राफ, तुम्हारा जो मार्जिन में लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा नाम क्या है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम XYZ है, ठीक है, जो भी है. यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करो नाम लिखा हुआ है कुछ. यस, नाम क्या लिखा हुआ है, यू आर दीपक कुमार. तो तुमको लिखना पड़ेगा दीपक कुमार सेक्रेटरी, अपना डेजिग्नेशन सेक्रेटरी, नीचे नेक्स्ट लाइन हिस्ट्री सोसाइटी, नेक्स्ट लाइन DAV देहरादून. दिस इज हाउ यू राइट योर नोटिस. Okay, I know visible nahi hai, Krishna. That's why I ask everyone to buy this book. It is so helpful. And I'll upload the thing in the description box. Now, ये जो तुम लिखोगे नोटिस, इस बुक में वो बॉक्स नहीं बनाया हुआ है, उसको तुमको बॉक्स में बना देना है. तुमको पूरा पूरा 5 नंबर मिल जाएगा. All right.
चैप्टर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा आया है एग्जाम में वो भी हम बताएंगे. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग एवरीवन, प्लीज लाइव के एंड तक रुको, तब हम बहुत सारा चीज बता पाएंगे. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अब तुमको जो भी लिखना है, अब लेटर लिखना है. लेटर में क्या लिखा हुआ है? राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स. लेटर सबको पता है, पहले सेंडर एड्रेस, अपना एड्रेस देना है, फिर लाइन छोड़ना है, फिर डेट लिखना है, फिर लाइन छोड़ना है, फिर जिसको तुम भेज रहे हो द एडिटर. अब मान लो बहुत बार क्वेश्चन में पेपर का नाम नहीं रहता है, न्यूज़पेपर का नाम, तो तुम अपने मन से हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, प्रभात खबर, कुछ भी लिख सकते हो. लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो तुमको टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना है. एंड सिटी में तुम रांची, जमशेदपुर कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. सब्जेक्ट क्या होगा? कंप्लेन रिगार्डिंग लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. रिपोर्ट का बॉक्स नहीं बनेगा, सिर्फ नोटिस का बॉक्स बनेगा. ओके, रिपोर्ट का बॉक्स नहीं बनेगा, सिर्फ नोटिस का बॉक्स बनेगा. Okay, Arman, I'll also explain the poems. Just wait for a second. We are going line by line. Now coming to your report. Report में simple कुछ नहीं करना है. Again, it's here right in front of you. Report में, just a second. रिपोर्ट में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? राइट अ रिपोर्ट ऑन फायर एक्सीडेंट. तो सबसे पहले तुम यहाँ पर ऊपर में लिखोगे फायर एक्सीडेंट हेडिंग. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखोगे बाई तुम्हारा जो नाम है. फिर नेक्स्ट लाइन में जमशेदपुर, रांची, जो भी लिखना है. नेक्स्ट लाइन में डेट, एंड एक लाइन छोड़ के स्टार्ट कर दोगे अपना रिपोर्ट लिखना. दैट्स इट. ठीक है. सारा चीज हम लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डोंट वरी. सो कितना क्वेश्चन आंसर करना है सेक्शन बी से? लेट मी सी हाउ मेनी हैव अंडरस्टूड. सेक्शन ए से 5 आंसर करना है, अनसीन पैसेज. सेक्शन बी से कितना क्वेश्चन आंसर करना है? 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है, रिपोर्ट, नोटिस एंड लेटर. कितना आंसर करना? आंसर एनी 2 एग्जैक्टली. एंड हाउ मेनी मार्क्स डज इट होल्ड? कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है? आंसर एनी 2 है. एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स. ओके. रिपोर्ट लिखोगे 5 मार्क. एडिट ऐसा मत सोचना कि तीनों लिख देंगे तो हमको 15 मिल जाएगा. सिर्फ तुमको तीनों में से 2 ही लिखना है. तो अगर C is the most tricky part. Is my connection all right? I think it's showing it's unstable. Okay, now coming to section C, literature part, the most awaited parts. बहुत लोग वेट कर रहे हैं इस पार्ट का. Now coming to section C, literature. Now section C is all about short answer questions. ठीक है. और section D में भी नहीं आएंगे, रुक जाओ. section C में 7 questions दिया हुआ है. If you see your model paper set 4, ठीक है, जो भी सेट उठा लोगे, सेट 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 क्वेश्चंस है. आंसर एनी 5. आंसर एनी 5. तो तुमको 2 क्वेश्चन का छूट मिल रहा है. तुम आराम से 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो. तो 7 में से 5 करना है. जस्ट लाइक अनसीन पैसेज में भी 7 में 5 किए, सेक्शन बी में 3 में 2 किए, सेक्शन सी में फिर से 7 क्वेश्चंस रहेगा, 5 आंसर करना है. बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल रहा है. 2 छोड़ने का ऑप्शन मिल रहा है. मतलब हो सकता है तुम एक पोम छोड़ सकते हो, एक फ्लेमिंगो प्रोज छोड़ सकते हो, एक विस्तास का चैप्टर छोड़ सकते हो. इट डिपेंड्स. लेकिन तुमको बाकी 5 आना चाहिए. ओके, ये ध्यान में रखना. नोटिस फॉर्मेट हम अपलोड कर देंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके फरहीन, यू विल हैव दैट आइडिया. Okay, all right. So coming to section C, the 11th question is, अब ये कितने मार्क्स का है? सेक्शन C 3 मार्क्स का है. ठीक है. हर एक क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन आंसर करना है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स है, मतलब 15 मार्क्स का सेक्शन C है. पहला वाला कितने मार्क्स का था? 5 into 2 10 मार्क्स का. सेक्शन B कितने मार्क्स का था? 5 into 2 10 मार्क्स का. तो 10 10 20. सेक्शन C कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का. तो 20 plus 15 35. एंड सेक्शन डी अगेन 5 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स. तो 40 मार्क्स टर्म 1, 40 मार्क्स टर्म 2, एंड 20 मार्क्स कहाँ गया? वो हम लोग देंगे, टीचर्स देंगे, इंटरनल है. सो सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट गिव जॉय एंड हैप्पीनेस? What are the things of beauty that give joy and happiness? Please turn to page number, if you have your board booster book in front of you, page number 30. Okay, page number, just a second, page number 31. Page number 31.
Page number 30 and 31. Just see that. How is a thing of beauty joy forever? Question क्या पूछा गया है? What are the things of beauty that give joy? Okay, to have and happiness to man. हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी आता, तब तुम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करते जो इस बुक में है इन पेज नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर. लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. सो योर आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 6 in page number 31. Question number 6 in page number 31. The things Keats mentioned as things of beauty. तो तुम आंसर कैसे लिखोगे ना. ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन. तुम सिर्फ सन मून अर्थ स्टार नहीं लिखने वाले हो, तुमको आंसर कैसे करना है. हियर इज द ट्रिकी पार्ट. ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड द लाइव राइट नाउ एंड दे हैव लेफ्ट द लाइव, दे आर गोइंग टू मिस अ बिग चांस टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि अभी हम बताने वाले हैं कि कैसे आंसर करना है जिससे तुमको हेल्प होगा. The question is, what are things of beauty that give joy and happiness to man? तुमको आंसर क्वेश्चन को रिपीट कर देना है, लेकिन आंसर फॉर्मेट में, क्योंकि तुम क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रही हो और एग्जामिनर एक बार में हजार कॉपीज चेक करेगा. तो तुम अगर लिख दोगी सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 एंड तुम्हारा स्टार्ट ही सेंटेंस ऐसे होगा, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन as mentioned by the poet Keats are, और तुम फिर स्टार्ट करोगे as it is written, sun, moon, trees, simple sheep, flowers like daffodils, clear rills and rusk rose. तो तुम जो पहला लाइन लिखी हो तुम उसमें क्वेश्चन दर्शा दे रही हो, क्वेश्चन दिखा दे रहे हो, तो तुमको तुम्हारा फुल मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है. अब इसमें तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स कांस्टेंट, क्योंकि 3 मार्क्स का है. अगर सिर्फ 1 मार्क का होता तुम एक लाइन लिख लेते, लेकिन ये जॉय क्यों देता है. ओके, द क्वेश्चन इज क्या क्या चीज जॉय देता है, बट ऑल्सो राइट ये जॉय क्यों देता है. बिकॉज it is a source of happiness and pleasure, the loveliness that keep things which affects a man is internal and never passes into nothingness. तो ये हमेशा एक इंसान के टच में रहता है. These all things you need to write. Okay, all right. So then coming to the next, so is it clear? Coming to the next question, art students, are you all paying attention, because tomorrow you are having your exams. Okay, so get ready. So next question, what is the plea of the folk who had what was the plea of the folk who had put up the roadside stand? What was the plea of the folk who has put up the roadside stand? All those students who are having this doubt that ma'am, Rattrap, मैम रोड साइड स्टैंड और शुड विजर्ड हिट मॉमी आपके बुक में नहीं मेंशन्ड है, यहाँ पर डिलीटेड लिखा हुआ है. यस, डिलीटेड जरूर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं देके अगर तुम लास्ट में दोगे, see, look at the end, it is written appendix and these chapters are included. So please open to page number कौन कौन सा क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, कैफ, आई लेट यू नो. जस्ट लेट मी फिनिश द मॉडल सेट पेपर एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग आंसर्स कैसे लिखना है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहा है. सो ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which might come in your tomorrow's exam or day after tomorrow, I'll discuss before the live ends, after the discussion of term 2. Okay, all right. Now see page number 3, the last, towards the end, page number 3, towards the end, appendix ka khojo. All right, see the question, what are the things of what was the plea of the folk who had put up the roadside stand? The question number 1, exact same question जो मॉडल पेपर में आया है वो इस बुक में exact same question है. What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? The rural folk, the plea of the folk that had been put up by that was put up the roadside stand was in order to attract customers, or was in order to bring customers so that they can buy some of their products, and city folk would pass the roads and would pass from there, and that is why this was the reason why rural people had this plea, because they wanted their products to be sold, and city people used to cross from the roadside stand. That's why they were selling their product there. Okay. Yes, they didn't purchase anything from there. Then always see when they stop, they're asking for gas station and all. Yes, you can say that as well. But the what was the plea?
It was so that the pleaded that customers come, stop and buy the products there. Okay. All right. Coming to the next question, what did the servants announce? ये सातों क्वेश्चन में तुमको कोई 5 आंसर करना है, ठीक है? हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आई वांट टू डिस्कस एवरी क्वेश्चन, ठीक है? हिंदी भी तो हम नहीं पढ़ाते हैं. ओके अक्सर, क्वेश्चन पेपर देने का जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन गूगल, ठीक है? तुम डाउनलोड कर लो, तुम सीधा उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है. हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं सो दैट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है उनको ये हेल्प मिले. तो तुमको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल मिल जाएगा गूगल में, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ओके. Now, what did the servants of at Rajendra Prasad house take Gandhi to be? Why was he not allowed to not allowed water from the well? So, how many have difficulty in the chapter Indigo? Please let me know. कितने लोग को Indigo chapter में difficulty है? Please raise your hand. कितने लोग को Indigo chapter में difficulty है? Yes, yes, yes. How many have difficulties in Hindi B? Sorry, I'm so sorry. Not Hindi B. Somebody wrote Hindi B. I'm so sorry. In Indigo. Yes, in Indigo. How many are having difficulties? Let me just read the comments. Okay. All right. Now Indigo नहीं आता है. All right. I have already uploaded a video, an entire explanation of Indigo chapter. अगर उससे पढ़ लेते हो अभी, I know बहुत lengthy है, पार कर करके भी पढ़ लोगे तो भी तुम समझ जाओगे. Now, I'm not ignoring anybody. Again, the live chat is passing so quickly. I'm unable to see a lot of messages. Okay. So Indigo chapter is all about who is Rajkumar Shukla. Favorite question है boards का, वो chances है वो पूछेंगे. Rajkumar Shukla was a peasant and it is there in the book as well. That's why I'm telling you, all of you, buy this book, study from here. Majority questions will be solved. But तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है, so what can I say? Anyway, here the question is, what did servants at Rajendra Prasad's house take Gandhi to be? सो तुम्हारा आंसर जो होगा, देखो बहुत लोग को आंसर नहीं पता है, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन को एग्जैक्ट कॉपी कर देते हो इन आंसर फॉर्मेट तो चांसेस है कि तुमको मार्क्स से मिल जाएगा, लेकिन तुमको थोड़ा आंसर लिखना पड़ेगा. ऑलराइट, सो यू हैव टू से द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद mistook or took Gandhi as one of the untouchables. Okay, that is the reason he was not allowed, because he was considered as an untouchable and a person who was not accepted so freely in the society. He was not allowed to draw water from the well. So अगर एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करना है, तुमको उसको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है. अगर एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना है. मॉडल पेपर एनालिसिस. ओके, some questions came. इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिगो का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स ऑल देयर इन द बुक. जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारा कुछ इस बुक में दिया हुआ है, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. फिर भी अगर तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो हम अभी आफ्टर द लाइव इन द इवनिंग हम पीडीएफ भेज देंगे सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. एंड all the answers are there in this book. It's available in New Variety Store, Sakchi, Tank Road. Please go and buy this book. English जिसका हो गया है good, but English elective, English book का promotion है. It's not book का promotion. तुम लोग का फायदे का बात कर रहे हैं, मेरा book already बिक रहा है. Okay, so तुम लोग के फायदे का बात कर रहे हैं because you are going to study from this book and you are going to score well in your exams. Okay, now so this is clear. The 14th question, what were the options that Sophie was dreaming? Why was it most likely that two girls, Sophie and Jancy, would find work after schools? ठीक है, so Sophie and Jancy कौन था? Going places. How many know going places?
Going places. ओके नाउ गोइंग प्लेसेस में सोफी एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ड्रीमी थी, बहुत ज्यादा अपने ओन फैंटेसी वर्ल्ड में रहती थी, उसको और दुनिया से किसी से मतलब नहीं था। और वो एक फुटबॉलर, आयरिश फुटबॉलर के बारे दिन रात इमेजिन करते रहती थी, फैंटेसाइज करती थी, जिसका नाम था डैनी केसी। नाउ सोफी की एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड, जिसका नाम था जैंसी। एंड जैंसी, JANSIE, ये बहुत रियलिस्टिक लड़की थी जो दुनिया में रहती थी, अपने दुनिया में नहीं रहती थी, क्या हो रहा है उससे अवेयर रहती थी। शी वॉज कंप्लीटली ऑपोजिट टू हाउ सोफी वॉज इन रियलिटी। सोफी का सपना था कभी हम बुटीक खोलेंगे, कभी हम एक्ट्रेस बनेंगे, कभी हम ये बनेंगे, कभी हम वो बनेंगे। सो ख्याली पुलाव जो होता है वो सोफी बहुत ज्यादा बनाती थी। बट जैंसी ऑन द अदर हैंड, शी समवेयर न्यू दैट हम लोग दोनों को बिस्किट फैक्ट्री में बड़े होके काम करने हैं। सो व्हाट वर द ऑप्शन सोफी वाज ड्रीमिंग? सोफी ड्रीम कर रही थी कि वो एक दिन बड़े होकर मैनेजर बनेगी, फिर बुटीक खोलेगी, फिर एक्ट्रेस बनेगी, फिर ये बनेगी। दीज वर द ऑप्शंस। Where was it most likely that two girls, Sophie and Jancy, would find work after school? लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा तुम आंसर ऐसे लिखोगे, द मोस्ट लाइकली प्लेस वेयर द टू गर्ल्स सोफी एंड चांसी वुड फाइंड a job or would work would be a biscuit factory. So जानसी बात बात में अपनी फ्रेंड सोफी को बोलती है कि तुम क्यों ख्याली पुलाव बना रही हो, हम लोग का रियलिटी यही है कि हम लोग को एक दिन बड़े होके जो है बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। बट सोफी वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट। शी जस्ट लिव्ड इन हर ओन वर्ल्ड एंड उसको था कि नहीं, हम एक दिन कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। 15th question, what did the peddler sell and how did he make all things? So what did the peddler sell? Peddler जहां word आएगा तुमको पता है rat trap है। So the rat trap peddler, the peddler sold rat traps which he made from small wires or other equipments which he generally got from begging or stealing from big stores. ठीक है, ये वाला चीज समझ में आ गया। and the following question is, how did he make the things? So again, he made the things at odd moments in his life, किसी से चोरी करके, किसी से मांग के, बिग फर्म से, स्मॉल फर्म से, एंड सब कुछ करके वो अपना एक पेडलिंग वाला चीज करता था, मतलब कि वो रैट ट्रैप बनाता था एंड यूज्ड टू सेल दैट। Who was Roger Skunk? What was his main problem? So who was Roger Skunk? Again, it's mentioned in this poem if you want to take a look. So who was Rattrap seller is also mentioned, and वो अपने खाली टाइम में क्या करता था, that is also mentioned in this book. Okay, all right. Now coming to your who was Roger Skunk? Please see the chapter should visit it moments towards the end of this book. Who was Roger Skunk? Why did Jack narrate the story about him? So the question here is, who was Roger Skunk? What was his main problem? So Roger Skunk कौन था? He was a fictional character in Jack's stories. उसका main problem था, he used to have problems and would approach Wise Owl to help him and send him to the wizard of the solution. So this was his problem कि उसको हर चीज में ज्यादा प्रॉब्लम होता था एंड वो चाहता था कि वो एक आउल जो है विजर्ड तक उसको भेज दे। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर इस बुक में मिल जाएगा। हु इज मिस्टर लैम्ब? व्हाई डज ही हैव अ टिन लेग? So who is Mr. Lamb? Again, is the question from On the Face of It. I think it is from the chapter On the Face of It. Who is Mr. Lamb? Again, the question is here. Mr. Lamb is an old man with a tin leg. So a tin leg. So how did he get the tin leg? Because he was burned in fire. Because of that, his leg was missing or it got destroyed completely, and that's why he has a tin leg. So all of you are clear with section C. Section C में again 7 क्वेश्चन में 5 करना है। तुम जिसमें इसमें श्योर हो क्या 7 में से हमको 5 ही करना है, then you are going to attempt the 5 questions which you are sure for and which you are comforted नहीं ये 5 हमको करना है। So is it clear section C? Section C में answer any 5 करना है from 7 and 3 marks each. Coming to section D. Now section C में एक और चीज देखो, लिखा हुआ है not more than 50 words. कोई बता सकता है 50 words कितना लाइन होगा? 2 या 3 या 5 या 4? सेक्शन सी में कितना लाइन का आंसर्स लिखना होगा व्हेन इट इज 50 लाइंस एंड 3 मार्क्स?
Okay, when it is 3 lines, exactly 4 to 5 lines answer लिखना पड़ेगा. 3 to 4 भी चलेगा, 4 to 5 भी चलेगा. Again, it depends on the question. Question कैसा है, अगर थोड़ा लेंदी है तो तुमको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा. Section D में आते हैं, आंसर any one following in not more than 100 words, and तुम्हारा मार्क्स इसमें है 5 marks. तो 5 marks का है, which means approximately 100 words लिखना है, मतलब approximately 3/4 of the page or an entire page, depends. 3/4 is ample. Okay, and you will be able to also understand when you write, when you'll not be writing lengthy answers. So answer any one. पहला क्वेश्चन है इंडिगो से, दूसरा क्वेश्चन है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से. So if you have studied, answer any one है. So section D में answer any one. Whatever you are comforted with, whatever you know very well, that will be the first the answer which you will be writing in section D. So how many now, come on, let's do a revision. Section A में कितना आंसर करना है? 7 में से कितना आंसर करना है? सेक्शन ए में 7 में से कितना आंसर करना है? 1 2 3 4 5 marks, exactly. सेक्शन बी में आंसर एनी डैश फ्रॉम 3 क्वेश्चंस में कितना आंसर करना है सेक्शन बी में? आई एम अनेबल टू सी, तुम लोग क्या लिख रहे हो? सेक्शन सी में आई एम आस्किंग सेक्शन बी में आंसर एनी डैश फ्रॉम 3 क्वेश्चंस. सेक्शन बी क्या है? राइटिंग स्किल, रिपोर्ट, नोटिस एंड लेटर. आंसर एनी 2, एग्जैक्टली. सेक्शन सी अगेन 7 क्वेश्चन है, जिसमें लिटरेचर पार्ट है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. कितना आंसर करना है? लिटरेचर पार्ट सेक्शन सी कितना आंसर करना है? सेक्शन सी लिटरेचर पार्ट कितना आंसर करना है? Section C literature part, how many do you have to answer? 5, exactly 5 आंसर करना है. ओके, सेक्शन डी 2 क्वेश्चन है, आंसर एनी 1 और दोनों आंसर करना है. सेक्शन डी 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, कोई एक आंसर करना है या दोनों आंसर करना है? सेक्शन डी, हाउ मेनी आंसर्स डू यू हैव टू आंसर? 1. गॉट इट. तो टोटल में कितना आंसर करना हुआ? 5 सेक्शन ए से, 2 सेक्शन बी से, 7, 5 सेक्शन सी से, 10 एंड 5 10 12 एंड अगेन 13 सेक्शन डी से. सो टर्म 2 से 13 क्वेश्चंस टोटल में आंसर करना है. टर्म 1 से टोटल क्वेश्चन आंसर करने हैं. ठीक है, गॉट इट? Done with your term 2. Now please let me know how did you find this revision. And then I'm going to, we have 15 minutes 10 minutes left, so we will be discussing कैसे एग्जाम में आंसर करना है और OMR शीट कैसे करना है. एग्जाम हॉल में जाओगे फिर कैसा रहेगा वो सब अभी हम बताएंगे. पर सबसे पहले ये बताओ, how was the discussion? Did you all understand? How was the discussion? And anybody, students who are having their doubts, okay, because tomorrow is your exams and I'm not able to answer as many students because a lot of students are asking so many questions. बहुत लोग का मैसेज है जो हम एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं. सो प्लीज लेट मी नो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द डिस्कशन? क्या क्या डाउट्स है? प्लीज पुट इन योर डाउट्स so that I can discuss it. We have 10 minutes left. टर्म 1 समझ में आ गया, सारा क्वेश्चंस करना है. टर्म 2 में 13 टोटल में क्वेश्चन करना है. पहला से 5, दूसरा से 2, तीसरा से 5, चौथा से 1. सेक्शन सही लिखोगे. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, दोनों सेक्शन को मिक्स नहीं करना है. अगर तुम पहले सेक्शन डी शुरू कर दिए हो तो प्लीज सेक्शन डी कंप्लीट करके फिर सेक्शन बी में जाना या सेक्शन सी में जाना. ठीक है, कीप द ट्रैक ऑफ टाइम. 1 और आधा घंटा सिर्फ रहता है, बहुत जल्दी पार होगा, बहुत ज्यादा जल्दी पार होगा एंड तुमको समझ में नहीं आएगा. सो प्लीज कीप द ट्रैक ऑफ टाइम. अगर घड़ी नहीं पहन के गए हो तो टीचर्स, इन्विजिलेटर्स से पूछते रहना, क्योंकि बहुत बार इन्विजिलेटर्स नहीं बता पाते कि 1 घंटा बचा, आधा घंटा बचा. सो प्लीज कीप आस्किंग. सेक्शन डी तक सब स्टूडेंट्स को पहुंचना है. ओके, फ्रॉम सेक्शन ए कोई भी कोई पार्ट नहीं छोड़ेगा.
Everybody will be doing their question. Yes, important questions. Who asked about the important questions? Shifa Rahman, important questions I'll try to send as soon as I can in within an hour. हम ग्रुप्स में भेज देंगे, कॉलेज ग्रुप्स में, एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम important questions का लिंक डाल देंगे एंड समरीज का लिंक डाल देंगे एंड जो मॉडल पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पीडीएफ डाल देंगे. तो हम ये सारा कुछ डाल देंगे सो दैट तुम लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. ठीक है. अब आते हैं इस बात पे कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है. क्वेश्चंस आए एग्जाम में, इंडिगो से क्वेश्चंस बहुत आए हैं, रैट्रैप से क्वेश्चंस बहुत आए हैं. लॉन्ग आंसर आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इंडिगो शॉर्ट भी आया है. इंडिगो रैट्रैप से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. शॉर्ट टू योर गोइंग प्लेसेस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ये एक अच्छा, ये रोड साइड स्टैंड इंपॉर्टेंट है. देन इफ यू सी तुम्हारा और एक और चीज है, टर्म 1 एंड टर्म 2 मिक्स मत करना. टर्म 1 का सिलेबस अच्छे समझ लो. आई ट्राई टू पुट इन द सिलेबस ऑल्सो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट तुम लोग वो भी देख लेना. टर्म 1 एंड टर्म 2 को मिक्स मत करना. ओके. इंडिगो जिस बुक में है उसका नाम फ्लेमिंगो है, उस बुक का नाम. टर्म 1 में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो कंप्लीटली सिर्फ टर्म 1 का है. डू यू वांट मी टू टेल यू टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, टर्म 2 में? डू यू वांट मी टू टेल यू राइट नाउ? If yes, then please let me know in the live chat. Ayush, if you're not in my college, it's all right. Ayush, I will put everything in the description box. Just give me an hour. ठीक है, 1 घंटे के बाद प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. हम दोज वर नॉट फ्रॉम माय कॉलेज, इट्स ओके. हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारे चीज का डाल देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी, जितने भी चीज है, जितना हम सकते हैं, एंड इट विल हेल्प यू. ओके. सो yes, what question did I ask? What question did I ask? I forgot. What question did I ask just now? I genuinely forgot what was the question which I asked. Yes, term 1 and term 2 syllabus. Thank you. Term 1 and term 2 syllabus कितने लोग चाहते हैं कि अभी हम बताएं कौन कौन सा term 1 में आ रहा है और कौन कौन सा term 2 में आ रहा है? Yes. Yes. Okay. Okay then. ठीक है. Please pay attention. I'm telling you term 1 में कौन कौन सा आ रहा है and term 2 में कौन कौन सा आ रहा है. Please pay attention all of you English course students. No matter तुम आर्ट्स के हो जिसका कल एग्जाम है या फिर तुम कॉमर्स और साइंस के हो जिसका परसों एग्जाम है, एग्जाम होना है. ठीक है. तो सबको यहाँ पर ध्यान दो. टर्म 1 में जो चैप्टर्स हैं वो है, एंड प्लीज पे अटेंशन, टर्म 1 सिलेबस विल बी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव. उससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा. टर्म 2 सिलेबस विल बी कंप्लीटली सब्जेक्टिव. उससे एमसीक्यूज नहीं आएगा. इस बुक में हम दोनों दिए हैं सो दैट तुम लोग का रिविजन हो जाए. बहुत लोग है कि समरी नहीं पढ़ा है, चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर वो एमसीक्यू पढ़ के क्वेश्चन आंसर पढ़ लेगा तो उसको एक चैप्टर का आइडिया हो जाएगा. ठीक है. लेकिन इस बुक से टर्म 1 का जो सब ऑब्जेक्टिव है तुम उतना ही पढ़ना, टर्म 2 का जो सब्जेक्टिव है तुम वो पढ़ना. टाइगर किंग जॉइंड द एनिमी लास्ट लेसन. ओके. नाउ ध्यान दो. टर्म 1 का सिलेबस है द लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, माई मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, कीपिंग क्वाइट, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, notice writing, letter writing, article writing, note making and summary writing. तो ये जो नोटिस, आर्टिकल और लेटर और नोट मेकिंग है, ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा. सैल्यूटेशन कहाँ है, हेडिंग कहाँ लिखते हैं, योर्स लविंग कैसे होगा, ये क्या होगा, वैसा रहेगा. टर्म 2 में आते हैं. प्लीज पे अटेंशन. टर्म 2 syllabus. Okay, the Rattrap, Indigo, Going Places, A Thing of Beauty, roadside stand, should visit it mommy, memories of childhood, on the face of it, we too are human beings. We too are human beings से बहुत लोगों क्वेश्चन है कि क्या मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से वी टू आर ह्यूमन बींग्स आ रहा है. बहुत लोगों क्वेश्चन है मैम जिटकाला सा का पोर्शन आएगा या फिर बामा का आएगा. ओके. द करेक्ट थिंग इज वी टू आर, कटिंग ऑफ द हेयर नहीं आ रहा है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स आ रहा है. ऑलराइट. प्लीज
I'll let you know इसका सेम आएगा कि नहीं. Just a second. नोटिस राइटिंग आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगा, नोट मेकिंग आएगा, समरी राइटिंग आएगा. सो नोटिस राइटिंग तुम लोग देख चुके हो. नोटिस, लेटर, रिपोर्ट ये सब रहेगा. उसमें से किसी है. Do you want me to repeat once more? Okay. How many want me to repeat once more? Term 1 and term 2? How many want me to repeat once more? We have 5 minutes left. Also, please send in your questions. किसी को कोई doubt है, कुछ है, I'll be ending the live in another 5 minutes. It's buffering. I think I've used too much of data. Just a second. Is it clear right now? Yes, is it clear? Is it clear right now? Still buffering? Okay, just let me check. Is it clear right now? I think. Is it clear right now? It's still buffering, I guess. Okay. Anyway, we'll just finish with our thing. I think it's more than an hour. Okay, it's about 2 hours. So, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. All right. Okay. Please, I'll repeat the syllabus once more. All of you pay attention. I'll repeat the syllabus once more. All of you, please pay attention. टर्म 1 से जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो है, हम ये सिलेबस को भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे. तो प्लीज डोंट वरी, तुम लोग 1 घंटे के बाद देख लेना, ठीक है. जस्ट गिव मी 1 hour टाइम. आई आल्सो नीड टू हैव लंच एंड देन आई विल अटैच एवरीथिंग इन द एंड द समरी आल्सो एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो एंड द मॉडल पेपर आल्सो. ओके, सो आई विल अटैच एवरीथिंग. प्लीज जस्ट गिव मी an hour or 2, ठीक है. थोड़ी देर के बाद चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. टर्म 1 का सिलेबस है. लास्ट लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, माय मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल इन क्लासरूम, कीपिंग क्वाइट, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग. टर्म 2 का जो है वो है रैट ट्रैप, इंडिगो, गोइंग प्लेसेस, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, शुड विजिट इट मॉमी, memories of childhood, on the face of it, we too are human beings, letter writing, notice writing, report writing, note making and summary writing. Okay, so ये सारा कुछ हो गया. Now coming to the end of our live discussion, objective जब आंसर करोगे OMR, please make sure जितना भी डेटा फिल करोगे ध्यान से करना. चाहे वो रोल कोड फिल करो, रोल नंबर फिल करो या फिर सब्जेक्ट कोड फिल करो. If you are having any doubt in filling the question, the OMR sheet, please ask your invigilator. जब नाम लिखोगे नीचे कैपिटल लेटर्स में लिखना. यूज अ ब्लैक और अ ब्लू बॉल पॉइंट पेन. जेल पेन लेके नहीं जाना है. एंड नाम जब लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है, किसी एक का नाम उठा लेते हैं यहाँ से. लेट्स सी किसका नाम उठाते हैं. ओके, सैफ आलम. ऑलराइट, और मनीषा कुमारी. ठीक है, सैफ आलम और मनीषा कुमारी. ना सैफ आलम अगर है तो SAIF, देन एक बॉक्स गैप छोड़ोगे, देन ALAM अलग अलग बॉक्स में. मनीषा कुमारी सिमिलरली MANISHA, फिर एक बॉक्स छोड़ोगे, देन कुमारी. किसी का नाम होता है मोहम्मद समथिंग. सो M एक बॉक्स में लिखोगे, D एक बॉक्स में लिखोगे, डॉट दोगे उसी बॉक्स में या उसके नेक्स्ट उस बॉक्स में भी डॉट दे सकते हो. एक स्पेस छोड़ोगे, फिर तुम अपना नाम लिखना शुरू करोगे. ओके, इज द वीडियो स्टिल बफरिंग? I don't understand why is it so I think there's some issue. Okay, all right, is the video still buffering? All right, so OMR is done. We are, I hope you all do extremely well in your exams and all the very best to each and everyone present here. A very important notice for all the commerce and science students.
all the commerce and science students, please pay attention. Tomorrow, when the exams will be over of arts exam will be over, IE exam ho jayega. I will be having the question paper after the exam is over. So tomorrow 9 p.m. I will be again conducting a live and I will be solving that question paper जो arts का आएगा. ठीक है, क्योंकि माइट भी कुछ क्वेश्चन मैच कर जाए या साइंस और कॉमर्स का कंप्लीटली डिफरेंट पेपर आए, हम लोग को नहीं पता है. तो हम लोग कल रात को 9 o'clock फॉर साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स वील मीट अगेन tomorrow 9 p.m. and tomorrow we will be solving the arts question paper जो कल exam होने वाला है. Okay, after I come back from the invigilation duty, I will be having the question paper, so I will be discussing that and then I upload the question paper also in the description box tomorrow, not today, क्योंकि exam कल होगा, कल सबको मिलने वाला है. Okay, so please inform your friends. Tomorrow 9 p.m. exclusively for science and commerce students, I will be discussing IEA question paper. I'll solve the IEA question paper, which will be conducted tomorrow. Okay. Okay. Now, Kef Jamal. Yes. Happy I took your name. Now, thank you so much. We'll end the live here because I think the video is buffering and I might be appearing a bit hazy and I don't want that. So the video is buffering and anyway, we'll end the live here. Thank you so much for being so wonderful. All the best to all my art students, science and commerce also, but science and commerce we'll meet tomorrow. So be prepared. And art students, you can also join tomorrow 9 p.m. to see tum kitna sahi answer kiye aur kitna galat answer kiye. Okay? So all the best to every student. Score well in your exams. Give your best. Don't worry. Jitna padhai kiye ho, usme tum focus karo and you will do great. Okay? So thank you. Thank you so much. Thank you. I hope and I pray you all do well and I hope this live was very beneficial for each and every one. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Okay. Thank you. Any doubts you are having regarding anything, you can comment down below in the in this video after the live is over. I'll check the comments and I'll try to reply as much as I can. So कोई भी doubt है इस video के comment section में तुम जाके डाल सकते हो, हम उसको जितना हो सकेगा help कर देंगे. Okay? All right. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. All the best once again. Thank you. And yes, one more thing. My father always tells me that I forget this to tell everyone that please do subscribe to my channel and also hit the notification bell because the more love comes and the more I grow. Because thank you. I would also like to share that we have become a family of 3,000 now. So hopefully we'll grow and become 30 and 3 lakh and 3 crore one day. So thank you so much. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. We'll meet again soon and also hit the like button because it helps me to grow. Thank you so much. Thank you.